Hello everyone. In this session, we will continue exercise 8. In the last session, we have completed up to question number 11. Now question number 12. Find the area bounded by the curves. First curve is given as y is less than equals to x square and second one is y is modulus of x. y is less than equals to x square. Inequality यहाँ पे दिया हुआ है. We know that y is equals to x square का ग्राफ क्या होगा? सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर देते दोनों के लिए. तो y is equals to x square which is symmetric about the y-axis, right, and passing through the origin. So vertex at the origin, a y-axis, and this graph is for the y is equals to x square. Now this parabola divide this plane into three parts: interior to the parabola, exterior to the parabola, and a parabola itself, right? So now we know that this part, ये जो part है, this is called the exterior part, right? ये जो बाहर वाला part है, this is called the exterior part. This part, this one is the interior part, this is the interior part. Okay, यहाँ पे ये पैराबोला के अंदर का interior part, this one is the exterior part. Okay, and this line जो कर्व है वो पैराबोला itself. तो y is less than equals to x square का ग्राफ कौन सा आएगा, मतलब ये कौन सा रीजन शो करेगा, कौन सा रीजन शो करेगा y is less than equals to x square. तो इनइक्वालिटी को किस तरीके से सोल्व किया जाता है वो आपको पता है. यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडमली पॉइंट ले लेता हूँ. यहाँ पे कोई पॉइंट कौन सा होगा, 0,1. लेट आई एज्यूम दैट लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बोला था 11 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 में से जिस तरीके से हम रीजन फाइंड करते थे, सेम यहाँ पे हमको रीजन फाइंड करना है. किस तरीके से रीजन फाइंड करते थे वो पर आपको याद नहीं है तो आपको एक बार देखना है, ठीक है, शायद आपने देख लिया होगा. तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई इंटीरियर टू द पैराबोला सेटिस्फाई दिस inequality, that is y is less than equals to x square. तो इंटीरियर के अंदर कौन सा पॉइंट है, 0,1. so it satisfy this inequality. so y is less than equals to x square. अगर मैं यहाँ पे 0,1 पुट करूं तो x0 y1 1 is less than equals to 0 square, that is 1 is less than equals to 0, which is correct. मतलब my assumption, मैंने जो यहाँ पे एज्यूम किया है वो राइट है, करेक्ट है, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे कौन सा रीजन आया, y is less than equals to x square, that is nothing but interior to the parabola. Second line is y is equals to modulus of x. y is equals to modulus of x, उसका जो ग्राफ आएगा that will be this one, straight line, okay, on the positive axis. ये y, this is the y is equals to modulus of x का ग्राफ है. okay, point of intersection क्या होगा, तो this is the point of intersection. ये लाइन जो है वो y is equals to plus x and this line is y is equals to minus x. तो point of intersection of, सबसे पहले point of intersection of y is equals to x square and y is equals to x is, तो x is equals to x square, y को इक्वेट कर दिया तो x square minus x is equals to 0, x common, x minus 1 0, so either x is equals to 0 or x is equals to 1. So first point of intersection is 0 at the 0 and second one is at the 1, x is equals to 1. x 1 पुट करो तो y also 1. okay, तो यहाँ पे प्लस 1 तो it should be minus 1 obviously, right. तो x minus 1, y should be 1. now interior to the parabola, interior to the parabola and ये पैराबोला का अंदर का पार्ट है और लाइन दोनों के बीच वाला पोर्शन कौन सा मिलेगा यहाँ पे, दिस वन. ये पोर्शन जो है वो कॉमन रीजन है, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है. ए रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है, दोनों के अंदर जो रीजन है दैट वी नीड टू फाइंड. सो दोनों के अंदर जो कॉमन रीजन है यहाँ पे, हियर वी नीड टू फाइंड दिस रीजन. ओके, सो नाउ किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले लाइन के अंडर का जो पूरा एरिया है वो फाइंड करके पैराबोला का अंडर का जो एरिया वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे. नाउ दोनों साइड सिमेट्रिक है, दोनों साइड सिमेट्रिक, सो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. सो फर्स्ट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको हम y1 कंसिडर कर लेते, y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x. सो पॉजिटिव साइड के अंदर y इज इक्वल्स टू x एंड इसको हम कंसिडर कर लेंगे y2. एरिया बाउंडेड बाय द, एरिया इज नथिंग बट 2 times 0 to 1. okay, 2 times 0 to 1, area under the line minus area under the parabola, area under the line minus area under the parabola. okay, so 2 times 0 to 1, area under the line, that is y2 minus y1 into dx. y2 is nothing but x
So 2 times 0 to 1 x minus y1 is nothing but x square into dx. So area is equals to 2, x का इंटीग्रेशन x square by 2, x square का x cube by 3, limit is from 0 to 1. So area is equals to 2 times x is equals to 1, तो 1 square 1 by 2 minus 1 by 3 minus 2 into 0 पुट करते हैं तो 0 minus 0, तो area is 2 times 1 by 2 minus 1 by 3, that is 3 minus 2, 3 to the 6. So it implies that area is equals to 2 into 1 upon 6. तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया मिला that is nothing but 1 upon 3 square units. तो ये हो गया आंसर. Okay. Next, question number 13. Using the method of integration, we need to find the area of triangle ABC whose coordinates are A 2,0, B 4,5 and C 6,3. 8.2 एक्सरसाइज के अंदर भी हमने ऐसे क्वेश्चन देखे, राइट? तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते. तो दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. फर्स्ट इज पॉइंट ए विच इज नथिंग बट 2,0. तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए दैट इज 2,0. देन पॉइंट बी दैट इज 4,5, x4 and y is equals to 5. So somewhere here point B that is nothing but 4,5 and C 6,3. तो x is equals to 6 and C y coordinate 3. तो यहाँ पे कोई पॉइंट C that is 6,3. तो A हो गया हमारा ट्राइंगल ABC, राइट? दिस इज द ट्राइंगल ABC. ओके, इसका एरिया आपको यहाँ पे फाइंड करना है. वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन. ओके, इसका एरिया वी नीड टू फाइंड, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है, राइट? सो नाउ किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया अंडर द लाइन AB, देन प्लस एरिया अंडर द लाइन BC माइनस एरिया अंडर द लाइन AC. तो AC का अंडर का जो एरिया है वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे दिस पोर्शन. ओके, तो ऊपर वाला पार्ट मिलेगा, राइट? तो area of triangle ABC is nothing but area of triangle ABC is equals to area under the line AB plus area under the line BC minus AB का एरिया कौन सा होगा? देखो यहाँ पे अंडर AB एरिया, दैट मीन्स दिस वन पूरा, राइट? AC का एरिया भी ये पूरा, माइनस येलो वाला पोर्शन कर देंगे तो ऊपर रेड वाला पोर्शन मिल जाएगा. सो माइनस एरिया अंडर द लाइन AC. ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB, BC एंड AC सबसे पहले तो फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे हमको. सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन AB, BC एंड AC. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट A that is 2,0, 4,5, B 4,5 and C which is nothing but 6,3. okay, C is nothing but 6,3. equation of line AB find करते. तो equation of line AB that is nothing but y minus 0, y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon x minus x1. तो y minus 0 upon x minus 2 is equals to 5 minus 0 upon 4 minus 2. So y upon x minus 2, y minus 0 that is y upon x minus 2 is equals to 5 upon 4 minus 2 which is nothing but 2. okay, तो y is equals to कितना हो गया? तो 5 by 2 into x minus 2, right? तो और यू में राइट y is equals to 5 by 2x minus 5. इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y1. दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन AB. okay, similarly equation of line BC, for the BC y minus y1 upon x minus x1, तो y minus 5 upon x minus 4 is equals to 3 and 6. So 3 minus 5 upon 6 minus 4. So 3 minus 5 that is minus 2 and 6 minus 5, right? तो 6 minus 4 that is equals to plus 2. तो दोनों कैंसिल, तो minus 1. तो y minus 4 upon x minus 4 that is equals to minus 1. It implies that y minus 4 is equals to minus of x minus 4. So y is equals to, या तो y minus 5 is equals to minus x minus minus plus 4. It implies that y is equals to minus x plus 9. इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y2, right? And this is nothing but equation of line the AC. This is the
इसको हम कंसिडर कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन, विच इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी. तो इक्वेशन ऑफ line AC, which is nothing but y minus AC. So 2 0 and 6 3, right? So y minus 0 upon x minus 2, y minus 0 upon x minus 2 is equals to 3 minus 0 upon 6 minus 2, 3 minus 0 upon 6 minus 2, so 3 by 4. So it implies that y upon x minus 2 is equals to 3 by 4. So y is equals to 3 by 4 into x minus 2. It implies that y is equals to 3x by 4 minus 3 to the 6 dividing by 4. So that is equals to 3 by 2. इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y3, which is nothing but 3 by 4x minus 3 by 2, which is equation of line AC. Right? Now area. तो एरिया हमने अभी क्या देखा? तो एरिया इज नथिंग बट एरिया A is equals to area under the line AB plus area under the line BC minus area under the line AC. But AB कहां से कहां तक? So AB is from 2 to 4. This point, that is 4,0, and this is the 6,0. 2 to 4 and 4 to 6. So AB is from 2 to 4. So limit is from, यहाँ पे limit is from 2 to 4. This one is from 4 to 6, right? And minus area of AC, that is from again 2 to 6. तो area हो जाएगा, integration is from 2 to 4 y1 dx plus 4 to 6 y2 dx minus 2 to 6 y3 dx. Okay, AB, BC and AC को यही हमने assume किया है. So 2 to 4 y1 is equals to y1 5 by 2x minus 5. So 5 by 2 into x minus 5 into dx plus 4 to 6 area under the BC. So equation of BC, that is minus x plus 9. So minus x plus 9 into dx minus 2 to 6 y3 is equals to, तो y3 हमारे पास है 3 by 4x minus 3 by 2. तो 3 by 4 into x minus 3 by 2 dx. Okay, so area is equals to 5 by 2 x का x square by 2 minus 5x, limit is from 2 to 4, plus minus x square by 2 plus 9x, limit is from 4 to 6, minus 3 by 4 into x square by 2 minus 3 by 2x, limit is from 2 to 6, right? Limit is from 2 to 6, from 2 to 6. So area is equals to 2 to 4, so 5 by 4 x square, so which is nothing but 16, 4 square 16 minus 5 4 जा 20. Okay, minus 2 put करते तो 5 by 4 into 2 square, which is equals to 4 minus 5 4 जा 5 2 जा 10, right? So this one is minus 10 plus for the BC minus 6 square, that is minus 36 by 2 plus 9 6 are 54, 4 that is minus 16 by 2, 9 4 are, that is 36, minus 3 by 8 x square, that is 36. Okay, minus 3 by 2 into 6. यहाँ पे आगे माइनस साइन है तो अंदर भी माइनस. नाउ फॉर द 2, तो 3 by 8 and 2 square, that is nothing but 4, minus 3 by 2 into 2. Okay, so यहाँ पे 4 4 जा 16, right? Then here 4 4 get cancel, 18 2 जा 36, this 2 get cancel 8, then 4 9 जा and 4 2 ja, this one is 3, 4 2 ja 8 and here 2 to get cancel. तो area is equals to कितना हो गया 5 4 ja 20 minus 20, right? Okay, then 5 by 4 into x plus 16. Okay, minus 5 minus 10. Okay, plus minus 18 plus 54. So minus 18 plus 54, minus minus plus 8 plus minus minus 36, minus 9 3 the 27. So 27 by 2. Then minus
3 3 जा 9. Okay, minus 3 by 2 and minus minus plus 3. Okay, so this is equals to, this one is 0, 5 minus 10, that is minus 5, minus minus plus 5. Now minus 18 minus 36, so plus 54, 0 हो जाएगा पूरा, तो plus 8, right? Minus 27 by 2 minus 3 by 2, 27 minus 3, 24, 24 by 2, that is 12. Okay, so plus 12, 12 plus 3, 15, 15 minus 9, which is nothing but 6, so minus 6. So area is equals to 5 plus 6, 11, sorry, 5 plus 8, 13, 13 minus 6, so 13 minus 6, so area is equals to 7 square units. तो ये हो गया हमारा आंसर. ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया? 7 square unit. Right. Next, question number 14, same as question number 13. We need, using the method of integration, we need to find the area of the region bounded by the lines. 3 lines are given. So 2x plus y plus 4 0, 3x minus 2y plus 6 0, and x minus 3y plus 5 is equals to 0. तो सबसे पहले equation of lines, 2x plus y is equals to 4, first number. Then 3x minus 2y is equals to 6, second number, and x minus 3y plus 5 is equals to 0, that is third number. Okay, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं सबसे पहले तो x axis and y axis. Origin, first 2x plus y 0 is equals to 4, x 0, then y 4, x is equals to 0, then y will be 4, y is equals to 0, then x will be 2. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, which passing through the point, this point is 0, 4 and this point is 2, 0. Next 3x minus 2y is equals to 6, y 0 अगर मैं पुट करूं, then x will be plus 2, तो plus 2, 0 में से, and अगर x 0, then y will be minus 3, तो y is equals to minus 3 somewhere here, तो second line ये हो गई, right? And which passing through the point 0, minus 3. ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है. थर्ड x minus 3y is equals to 5. अगर y 0 पुट करता हूं, then x will be minus 5 somewhere here, and y is equals to 0, then x will be, sorry, x is equals to 0, then y will be 5 by 3. तो यहाँ पे, so this is the third line. Okay, now यहाँ पे इसको हम नाम a दे देते हैं. This is the point of intersection of the first and third line, that is B, and this is the point of intersection of second and first line, which is equals to C. तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे यहाँ पे हमको, right? So from the, this is the third equation and first equation, third and first का point of intersection हमको क्या मिलेगा? B point. तो third and first, use from the first and third, from the equation 1 and 3. First equation is 2x plus y is equals to 4, 2x plus y is equals to 4, and x minus 3y is equals to 5. आप दोनों को सोल्व करो, you will get x is equals to 1 and y is equals to 2. Either elimination, subtraction or cross multiplication method. कोई से आप सोल्व कर सकते हो, राइट? देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 plus 2 4, 1 minus 3 2 जा 6, that is equals to minus 5. ओके, यहाँ पे plus 5 is equals to 0 दिया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा हमको 1, 2. सो दिस पॉइंट इज 1, 2, बी पॉइंट. ओके, ए तो हमको पता है 2, 0. नाउ सी पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड एंड थर्ड लाइन. सो फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड, from the second and third line, second line is 3x minus 2y is equals to 6 and x minus 3y is equals to 5. We will get x is equals to 4 and y is equals to 3. 3 4 are 12 minus 6, that is 6, and 4 minus again plus 5 is equals to 0. So 4 minus 9, that is plus minus 5 plus 5 0. तो point C हमको यहाँ पे मिल गया, which is nothing but 4, 3. Okay, and this is the 2, 0. Now we need to find this area. Area आपको यहाँ पे find करना है, this one. Okay, so area is nothing but यहाँ पे क्या होगा? तो from B, that is this point is 1, 0 and this point is 4, 0. So 1 to 2 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया अंडर द लाइन BC फ्रॉम द 1 to 4, राइट? माइनस 1 to 2 के अंदर एरिया अंडर द लाइन AB एंड
2 to 4 के अंदर एरिया अंडर द लाइन AC. ओके, सो नाउ अब AB, BC एंड AC कौन सी इक्वेशन है वो भी देखना पड़ेगा. तो BC इज नथिंग बट थर्ड लाइन. तो A हो गया हमारा BC, राइट. सो AB लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन AB. सबसे पहले वापिस भी आप ट्राइंगल बना सकते हो, ऊपर वाला यूज कर लेते. तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB. So AB is nothing but AB, that is first line, which is 2x plus y is equals to 4. So AB is equals to 2x plus y, 2x plus y is equals to 4. It implies that y is equals to 4 minus 2x. इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y1. Then equation of line BC. So BC is nothing but equation of third line, that is x minus 3y plus 5 0. So x minus 3y plus 5 is equals to 0. It implies that y2 is equals to, so x plus 5 dividing by 3, so x by 3 plus 5 by 3, right. And equation of line AC, which is nothing but, so AC is nothing but second line, 3x minus 2y is equals to 6. 3x minus 2y is equals to 6. It implies that y is equals to 3x minus 6 dividing by 2, तो 3 by 2x minus 6 by 2, 6 by 2 is nothing but 3. तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख देते हैं 3. इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y3. ओके, तो नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC. सो एरिया ऑफ triangle ABC, which is equals to, from the line, from the point 1 to 4, area under the line BC, area under BC from 1 to 4, minus 1 to 2, area under the line, this line, which is nothing but AB. 1 to 2, area under the line AB, which is from 1 to 2, minus area under the line AC, that is from 2 to 4, right. AC from the 2 to 4. So now वैल्यू पुट कर देते हैं. सो BC इक्वेशन क्या है, y2 x by 3 plus 5 by 3. तो x by 3 plus 5 by 3 dx, limit is from 1 to 4, minus AB is nothing but 4 minus 2x. So 4 minus 2x, limit is from 1 to 2. Okay, and minus 2 to 4, area under the line BC, sorry AC. So 3 by 2x minus 3, 3 by 2x minus 3 dx, यहाँ पे भी dx. Okay, so area is equals to x by 3 का इंटीग्रेशन, that is the x square by 2, so 3 to the 6 plus 5 by 3x, limit is from 1 to 4, minus 4x minus 2x square by 2, that is x square, limit is from 1 to 2, 3 by 2x, so 3 by 4x square minus 3x, limit is from 2 to 4. Okay, so area is equals to, वैल्यू पुट कर देते, 4 square 16 by 6 plus 5 4 जा 20 by 3, 1 upon 6 plus 5 by 3, right. 4 2 जा 8 minus 2 square, that is 4, minus minus plus 4 1 जा 4 minus 1 square 1, minus 3 by 4 into x square, that is 4 square, which is equals to 16, minus 3 4 जा 12, minus minus plus 3 by 4 into 2 square 4, तो 3 3 2 जा 6, यहाँ पे दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4, 3 4 जा 12 minus 12, that is यहाँ पे हो गया 0. तो एरिया इज इक्वल टू 16 by 6 plus 20 by 3. सो एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, 20 2 जा 40, 40 plus 16, so which is nothing but 4 square 16, so 46 dividing by 6, right. Then minus 1 upon 6 plus 5 by 3,
तो that will be the again LCM 5 2 10 plus 1 that is 11 upon 6. 8 minus 4 that is 4. 4 minus 1 that is 3. यहाँ पे 0 हो गया 3 minus 6 that is equals to minus 3. तो plus 3 minus 3 cancel. तो area is equals to 45 minus 11. So 46 minus 11. So 35 by 6 minus 4. So 35 that is 7 5 जा तो कुछ यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा. So 35 by 6 minus 4, right? So area is equals to 35 minus 6 4 are 24 dividing by 6. So the answer will be 35 11 upon 6. तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट. 11 upon 6 इज द आंसर. देखते कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गया ना. दिस इज द स्क्वायर यूनिट्स. ओके. तो एरिया इज इक्वल टू 11 upon 6 स्क्वायर यूनिट्स. सो दिस वन इज द आंसर. तो इस सेशन के अंदर यहाँ तक. फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15. थैंक यू.